myself Shahryar Khan. I am first year medical student in Rawalpindi Medical University. I completed my FSc in 2020 and secured admission in a medical college RMU in 2024 by securing 186 marks in Mdcat, and it was my fourth attempt. Yes, you heard the right. मैं 4 मरतबा MD कैट दे चुका हूँ और इसी वजह से मुझे मेरे वन ऑफ वेरी काइंड एंड humble senior Dr. Shahid Aziz requested me to make a video for you people so that you may get some inspiration from my story. So yes, I would like to share my own experience and my journey, how I made it possible after my 4 years. In this video, my main emphasis will be those repeated students who have just tried for 1 or 2 times but couldn't make it to the medical college. I would like to mainly emphasize on those students, and at the same time जो freshers MDCAT के student हैं उनके लिए भी कुछ अच्छी अच्छी guidelines और जो मेरे experiences हैं मैं उनके साथ share करना चाहूँगा. So let's get started. I completed my FSc in 2020 in Danish School Boys Shahryar Khan by securing 1017 marks. 2020 में मैंने MDCAT की पहली अटैम्प्ट दी एंड आई गॉट 182 मार्क्स आउट ऑफ 200 and made an aggregate of 91.37, and at the time it was a really good score because according to the previous records 91 was considered to be the safe side. Even after getting 91.37, I couldn't make it to the medical college, but here I learned a very good lesson of my life that always remain humble, never ever show off your abilities, क्योंकि अल्लाह ताला को भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि अगर आप इवन आप आसमान की बुलंदी पर भी हैं ना, आपने थोड़ा सा भी गरूर किया, you are just going to fall into the ground. So this was something, unfortunately I couldn't make it. मैंने नेक्स्ट साल फिर से MDCAT की तैयारी स्टार्ट कर दी और इस टाइम अनफॉर्चुनेटली द PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन had came into origin and was fully functional. एंड मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, MDCAT से भी बड़ा इम्तिहान PMC को फेस करना था. It started doing its experiments over the students, and I would not like to go into the detail of all that system, क्योंकि सिर्फ वही स्टूडेंट समझ सकते हैं जिन्होंने इस चीज़ को फेस किया था. PMC ने एक न्यू एग्जामिनेशन सिस्टम दिया जिसके ऊपर आपका ट्रेडिशनल जो पेपर पेन वाला सिस्टम था वो नहीं था. हमें कोई कार्बन शीट और उसका रिज़ल्ट को असेस करने के लिए जो एक अलग एक्स्ट्रा शीट मिलती थी वो भी नहीं थी. इट वाज जस्ट कम्प्लीटली ऑन अ टैबलेट. आपको ऑनलाइन टेस्ट लेना था और उसी वक्त ऑनलाइन आपका रिज़ल्ट आ जाता. एंड they claimed it was a just system, like every student was having the equal criteria and equal difficulty level, but I believe it was not. ऐसा बिल्कुल नहीं था. हर स्टूडेंट का पेपर डिफरेंट था फ्रॉम द अदर वन, and it was not a fair and just system to assess each and every student equally. It was not. So unfortunately I was able to make 160. So in spite of working for the next 2 consecutive years, I was able to make 169 out of 200 लगातार 2 साल मेहनत करने के बावजूद भी. सो इट वाज रियली अनबिलीवेबल मोमेंट कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी मेहनत के बावजूद I could only make 169. But as I have already mentioned that this was a new system generated by the PMC. इसके खिलाफ फिर बहुत सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स ने एहतजाज भी किया, सड़कों पे निकले, अदालत में केस ले गए और फिर वो स्टूडेंट्स जीत भी गए. फिर PMC को ऑर्डर मिले कि वो स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दे के फिर से पास कर दें, क्योंकि इनके जो सिस्टम था दैट वाज कम्प्लीटली फेलियर सिस्टम. बट दिस ग्रेस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाज आल्सो नॉट इक्वल. किसी स्टूडेंट को मोर देन 45 ग्रेस मार्क्स मिले और किसी स्टूडेंट को 4 से 5 मार्क्स मिले. I was awarded 10 more grace marks and now my score was 169 to 179. But still this was not a good score. So I couldn't make it to the medical college. But this year was actually stressful, very difficult for me to survive. Like every family member knew, every relative knew that I was left behind. और फिर ये वो लम्हा होता है जब आप 2 साल लगातार फेल हो चुके होते हैं. No doubt your parents and your siblings are not going to say anything to you, but
the relatives, they are going to judge you. They don't consider that you got 89% or 90%. They just say you were failed. हाँ भाई, आपका बेटा स्कोर नहीं कर पाया, फेल हो गया। उनके लिए यही वर्ड होते हैं, फेल। वो नहीं समझते कि हाउ मच एफर्ट द स्टूडेंट हैज़ पुट इन। सो दिस थिंग वाज रियली हार्ड ट्रेंडिंग फॉर मी, और एक स्ट्रेसफुल पीरियड से मैं गुजरा। बट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर समथिंग कि मुझे लाइफ में स्पोर्टिव पर्सनैलिटीज़ भी बहुत मिली, लाइक माई अंकल। बचपन में ही अब्बू की डेथ के बाद उन्होंने मुझे पाला, एंड हिज ड्रीम वॉज टू मेक मी अ गुड डॉक्टर, एंड आई वॉज डिटर्मिंड इनफ टू फुलफिल हिज प्लान। वो इस सारे पीरियड में मेरे साथ रहे हैं। वो समझते आ रहे थे कि मैंने दिल से मेहनत की है। सो ही वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड फॉर मी, ही गेव मी अनदर चांस। उन्होंने मुझे फिर से कहा कि बेटा आप फिर से एक बार अटैम्प्ट दें, और मैंने मेहनत की। But unfortunately, the life was not going to be easy for me. Right before exam Mdcat के चाचू की डेथ हो गई, and this was something really difficult for me. So this time, without any preparation, I again appeared in Mdcat, but I could only score 170 out of 200, and I couldn't make it. At the time, I was just going to leave up my studies, because I was the only child in my family, और फिर चाचू की डेथ के बाद this was also becoming more difficult for me. But my teachers and my other very good personalities I got in my life, they motivated me to continue my study. I appeared in NUMS test, but this time I did some good preparation, और फिर मेरे 140 marks out of 150. uh, but with an aggregate of 94.5%, even I was unable to make into medical college, although my NUMS test was marvelous, was exceptional. But due to less marks in FSC as compared to the other Corona students, it was not good score. So I decided to take admission in NUMS University. I got admission in cardiac perfusion. लेकिन अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक भी है ना कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी होती है, एंड दिस हैपेंड विद मी एज़ वेल। ये चौथा साल मेरे लिए बहुत ब्लेसफुल था। मैंने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट बाय द पंजाब कॉलेज, आई अपीयर्ड इन दैट एंड स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स. I gained fully funded scholarship. Then I applied for the HEC USET test for the foreign scholarship, and I was selected in that scholarship also. And then third came the medical cadet test. I applied in that, and fortunately, I was selected as a medical cadet as well. And the fourth one, Mdcat, I scored 186 marks out of 200. So after this complete struggle, I was blessed by the Allah Almighty. So finally, I made it. I scored an aggregate of 93% and got admission in Allama Iqbal and Rawalpindi Medical University as well. So I preferred Rawalpindi Medical University now. I'm completing my MBBS from here. So this was all about my journey. सो इस जर्नी में ना सिर्फ मुझे मुश्किलात आई, बल्कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हुई। सो वो तमाम चीज़ें मैं आपसे अभी अपने लेसन्स, अपनी लाइफ के लेसन शेयर करूँगा कि आपने भी सेम ही कभी हिम्मत नहीं हारनी। यू जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ। जितने भी मुश्किल हालात आएँ, आपने अपने ऊपर भरोसा रखना है और अपनी मेहनत के ऊपर, और अल्लाह ताला से कभी भी मायूस नहीं होना, नाउम्मीद नहीं होना. This is something very important for the medical students. Apart from my Mdcat story, I would also like to share the tips and tricks for the new Mdcat aspirants and for the repeaters as well. That never ever be harsh on yourself for the sake of studies. पढ़ाई के लिए खुद पे इतना जुल्म नहीं करना कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर दें. आपने अपनी स्टडीज़ और नॉर्मल लाइफ के दरमियान एक बैलेंस मेंटेन करना है. कभी भी ऐसा नहीं करना कि यू जस्ट स्टार्ट स्टडिंग एंड यू जस्ट वर्क टू मच हार्ड दैट यू लॉस योर माइंड. ऐसा बिल्कुल नहीं करना. ऑलवेज मेंटेन अ बैलेंस. मेंटेन अ बैलेंस. आफ्टर स्टडिंग फॉर द 4 years, आई एम जस्ट सेइंग दिस थिंग टू यू. ऐसा नहीं करना कि आप बैठ जाएँ और 16 घंटे पढ़ना. नो, नेवर एवर डू दैट.
MDCAT is not just a game of hard work, it's a game of nerve as well. The second thing I would like to share is that just make yourself limited to the people who are going to help you out in this journey. Don't overshare the things with especially your relatives. अपने रिश्तेदारों से चीज़ें शेयर ना करें, बिल्कुल भी ना करें. What you are doing, they are not going to help you out in this journey. Just you are responsible and answerable to your family members and to your parents. बस these are the only people who are going to help you out. बाकियों ने सिर्फ आपके बारे में बातें करनी है. They will just say you are a failure, or if you get successful, then they are going to clap for you. But those people who are going to help you out in this journey, whether they are your parents, आपके teachers हैं या आपके दोस्त हैं, whosoever it is, आपने उनके साथ गुड कम्युनिकेशन रखनी है. आपने अपनी तमाम चीज़ें MDCAT की स्ट्रेस, अपनी MDCAT की लेकनेस, आपकी वीकनेस, जो कुछ भी है, यू जस्ट कंप्लीट ओपन अप योर सेल्फ. और ये इसलिए है कि देयर इज़ ए वेरी गुड रीज़न बिहाइंड दिस. क्योंकि जब इंसान किसी प्रॉब्लम को फेस करता है ना, तो एट द टाइम ही इज़ वेरी बैफल्ड. उसको समझ नहीं आती कि हाउ आई शुड डील. बट इट इज़ अ गुड टेक्निक. आप अपनी प्रॉब्लम को लिख लें, तो लिखते ही आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. द सेम इज़ अ थिंग व्हेन यू शेयर योर प्रॉब्लम विद समवन हु इज़ गोइंग टू लिसन टू यू. तो आप अपना बहुत सारा स्ट्रेस, आपका जो MDCAT की स्टडीज़ के दौरान जो होता है, और जो आपकी वीकनेसेस होती हैं, आप शेयर करने से यू कम एट एन ईज़. तो दिस इज़ द मेन पॉइंट, दैट यू शुड शेयर योर थिंग. एंड द थर्ड थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, इज़ दैट नेवर बी अ रैबिट. रैबिट नहीं बनना. डोंट ट्राई टू जंप अप. ये नहीं करना कि बस यार इस हफ्ते के अंदर मैंने सारी सारी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेनी. ऐसा नहीं करना. जस्ट मेंटेन अ वेरी गुड, slow but steady speed, steady one. This is very important thing. I learned after the 4 years. थोड़ा थोड़ा काम करें, but it should be very efficient and consistently. So this is going to work very very fruitful and going to help you out in your journey. I made an habit of learning vocab. मैंने पूरी vocabulary याद की थी. And this was something I learned in my life. Like I used to memorize 5 words on the daily basis, 5 in the morning and 5 in the night. So for in these 2 years, I just crammed the whole dictionary. So this was something very important, that maintain a constant speed. So these three things are really important in your life, and this was from my side. बाकी रिमेनिंग टेक्निक के बायो कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, फिज़िक्स कैसे पढ़नी है, आई वुड नेवर लाइक टू गो इनटू दैट डिटेल. मैं आपको एक लास्ट चीज़ में आपसे फिर शेयर करना चाहूँगा. डोंट फॉलो एनी वन ब्लाइंडली. किसी को भी इम्प्रेस हो के आपने उसको ब्लाइंड फॉलो नहीं करना. यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ. आपको पता है आपकी ज़िंदगी के अंदर कौन सी वीकनेस है, एंड यू नो द बेटर. और इसी से रिलेटेड मैं आपसे MDCAT की एकेडमी की भी बातें शेयर कर लेता हूँ कि कौन सी एकेडमी चूज़ करनी चाहिए. नो एकेडमी इज़ गोइंग टू इंश्योर योर एडमिशन. आई कैन से दैट. चाहे वो किप्स एकेडमी है, चाहे स्टेप है, चाहे स्टार है, नो वन इज़ गोइंग टू इंश्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन. क्योंकि हर क्लास में आपके 100 बैचमेट्स में से कोई 4 या 5 अपना एडमिशन सिक्योर कर पाते हैं. सो क्या आप कहेंगे कि क्या वो एकेडमी का रोल था? नो, नॉट एट ऑल. अगर एकेडमी का रोल था तो फिर तो 100 के 100 बच्चे ही सिलेक्ट हो जाएं. सो ओनली द 4 and 5 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट एडमिशन, एंड दे आर द कंसिस्टेंट स्टूडेंट. दे हैड द हैबिट्स. दे मेड इट पॉसिबल बाय वर्किंग ऑन देमसेल्व्स. अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करने के बाद they are going to make it to the medical college. Video is getting too much lengthy. Unfortunately, I will be unable to explain each and every details of the subject wise study. So I would again say you are the master of your life. Maintain a good balance, and just search out the technique which is useful for you. Just go on the internet and see. There are thousands of researchers have made very good researches for the useful and productive studies. A few of the techniques I would like to mention it on the video as well. These include the Feynman technique, the mapping, and the space repetition as well. So these are something good for you to, you can explore it on YouTube and on the internet. So I would not like to go into the detail. So the last message for all of you is that हिम्मत नहीं हारनी.
जब तक आप खुद अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करते, यू आर नॉट गोइंग टू डिफीट। सो अपने हिम्मत नहीं हारनी, कीप इट अप। जैसे भी हालात हैं, जैसे भी सर्कमस्टांसेस आएँ, यू आर गोइंग टू मेक इट। बस